Hello students, in the previous video we had studied that so many movements, so many uprisings were held against the British economic policies and administration. So now today we will study about them in detail. First is Sannyasis uprising. Among the civil uprisings, the Sannyasis uprising was very important. The 1770 famine in Bengal had ruined the people economically. The apathy of British government, economic loot and ban on religious places urged the peaceful Sannyasis to turn rebellious. They got people's support and attacked the factories, colonies and forts of the company. It was through Governor General Warren Hastings' diligent efforts that the Sannyasis uprising could be brought under control. Bankim Chandra Chattopadhyay had also mentioned about Sannyasi uprising in his book Anand Math. Now Chuar uprising. Fed up with immense financial crisis, increases in land revenue and famine forced Chuar tribals in Midnapur district to take arms against the British rule. Rulers of Dalbhumi, Kailapal, Dhodka and Barabhumi joined hands to wage revolts against the British in 1768. This region remained disturbed till the end of 18th century. Then Ho and Munda uprising. Ho and Munda tribes of Chota Nagpur and Singhbhumi districts took arms against the East India Company government. The tribals strongly opposed the expansion of British administration in this region. King Jagannath of Parahar in Bengal supported the rebellion. Only after long struggle could the British suppress the uprising. Now, Kol uprising. The Kol of Chota Nagpur were up in arms when their land were given to Muslims and Sikh peasants. The other reasons of this revolt was land management system, way of revenue collection and merchant system. The angry Kols launched revolt in 1831 nearby Singhbhumi, Ranchi, Palamu, Hazaribagh, Manbhumi and other places. About 150 tribals, including their leaders Budho Bhagat and his son, were killed in this revolt. The revolt was suppressed after long armed campaign. Then Santhal uprising. Santhal revolt launched by the tribals against company rule was one of the most powerful uprisings. The area between Bhagalpur and Rajmahal was known as Daman-e-Ko. This was Santhal dominated area. They opposed the misbehave of land revenue officials. The flag of revolts was led by Santhal leaders Sido and Kanhu. They declared the end of company's rule in their region. Only after long struggle, the British could suppress this revolt in 1856. Ahom uprising. The British government tried to annex Ahom province to the English Empire in 1828. The annoyed Ahoms declared Gomdhar Kunwar as their king and attacked Rangpur. Ahoms were defeated. Khasi uprising. The British administration's decisions to construct roads in Khasi Hill and Silhat areas
enraged the Khasi tribes. Under the leadership of King Terah Singh, they revolted. Bar Manik and Mukund Singh, the Khasi leaders, put up brave resistance against the English forces, but they lost in 1833. Bhil Uprising. Bhil tribes were the residents of Western India. The agricultural policy and administrative excesses of British rule forced the Bhils to join field. The British believed that Peshwa Bajirao II and Triambakji provoked the Bhils to revolt. The struggle continued from 1812 to 1846. Now, Kutch Uprising. The English forces defeated King Bharmal of Kathiawar and Kutch to enthrone his minor son on the throne and ruled the state, taking power in their own hands. This move angered the supporters of Bharmal and they waged revolt against the British rule. They fought from 1819 to 1831. Now, Ramosi Uprising. The Ramosi tribe in the Western Ghats under the leadership of Sardar Chittar Singh revolts against the British rule in 1822. They plundered the region nearby Satara. Next, revolt of Diwan Bela Thumpi. Wellesley had signed subsidiary alliance with the King of Travancore in 1805. The king was unhappy with the terms of alliance, so refused to pay taxes. When the British mounted pressure, Diwan Bela Thumpi rose to revolt, which was supported by Nayar battalion. The English suppressed this revolt. Now, Wahhabis struggle. The British rule got most fatal changes from the Wahhabis. The activities of the Wahhabis continued from the 4th decade to 7th decade of the 19th century. Sayyid Ahmad of Raebareli championed this struggle. He was against any reform and change in Islam. Sayyidi Ahmad launched revolt against Sikh rule in Punjab, and when Company took control over Punjab in 1849, Wahhabis raised rebellion against the British. So students, we have seen so many struggles uprised in the against the British government, like Sannyasi Uprising 1770 में हुआ. वहाँ पर जो सन्यासी थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके इकोनॉमिक लूट तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो उनके रिलीजियस प्लेस थे उन पर भी वो किसी न किसी प्रकार से इंटरफियर कर रहे थे. तो सन्यासियों ने उस वक्त बहुत बड़ा विद्रोह किया और उनकी फैक्ट्रीज, कॉलोनी और जो कंपनी के फोर्स थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया. गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सन्यासी विद्रोह को दबाया था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, उन्होंने अपने आनंद मठ में इस सन्यासी विद्रोह के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है. चुआर अपराइजिंग हुआ. चुआर अपराइजिंग 1768 में हुआ. इसमें लैंड रिवेन्यू बढ़ जाने के कारण और बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी, उसके कारण वहां के लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह किया. इसके बाद हो और मुंडा अपराइजिंग हुआ. इन लोगों ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट में सिंह भूमि और छोटा नागपुर में मुंडा ट्राइब्स जो थे, हो और मुंडा ट्राइब, उन्होंने वहां पर विद्रोह किया और लेकिन अंग्रेजों ने उसे भी दबा दिया. फिर कोल अपराइजिंग हुआ 1831 में.
इसमें लगभग 150 ट्राइबल जो थे उन्होंने भाग लिया और बुद्धू भगत जो उनके लीडर थे उन्होंने उनका लीडर किया, उनको लीड किया और लास्ट में बुद्धू भगत और उनके जो सन थे उस रिवोल्ट में मारे गए और अंग्रेजों ने उसके बाद इस विरोध को भी दबा दिया। फिर उसके बाद संथाल अपराइजिंग हुआ। संथाल अपराइजिंग 1857 में हुआ। इसमें लैंड रेवेन्यू के खिलाफ जो ट्राइबल्स थे उन्होंने इसमें विरोध किया था और बहुत बड़ा ये विरोध हुआ था, लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने बहुत ही चालाकी से इसे भी दबा दिया। फिर अहोम अपराइजिंग हुआ 1828 में, फिर खासी अपराइजिंग 1833 में, भील अपराइजिंग 1812 टू 1846। ये सारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो भी रूल्स वो बना रहे थे उस सब के खिलाफ हो रहे थे। फिर कच्छ अपराइजिंग हुआ 1819 टू 1831 तक चला। और लेकिन ये सारे अपराइजिंग्स जो थे, सारे जो विद्रोह थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी सेना के दम पर दबा देती थी। रामोसी अपराइजिंग, रिवोल्ट ऑफ दीवान, बेला थम्पी, ये सारे वहाबिस स्ट्रगल, तो ये सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे स्ट्रगल शुरू हो चुके थे 1857 की लड़ाई के पहले। लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे इन विद्रोहों को दबाते जा रहे थे क्योंकि ये सारे छोटे छोटे रूप में हो रहे थे। छोटा सा ग्रुप अपनी ही एक जाति या एक वर्ग विशेष का ग्रुप बन जाता था और फिर रिवोल्ट होते थे। अगर ये सारे मिल गए होते तो शायद हमें तभी आज़ादी मिल चुकी होती।